Hello guys, I am Shubham from Tutorials. This video is about the DBT JRF PYQs, part 7 of this series. Okay, so before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from our side, but it will help us grow. The first question, given below are two statements. Statement 1, the manufacturing process of SARS-CoV coronavirus 2 mRNA vaccine requires synthesis of mRNA from DNA using in vitro transcription. Okay, so this is about coronavirus pandemic that caused in 2019. Okay, so mRNA vaccine manufacturing process requires synthesis of mRNA, right? mRNA को synthesis produce करना using DNA and in vitro transcription, right, outside the body in the lab. So about mRNA vaccine, this statement is correct. Okay, now statement 2, the naked mRNA is administered intramuscularly to the vaccine recipients. Okay, receivers, recipient means receiver, to generate a protective immune response. So basically naked mRNA is administered intramuscularly. This is a wrong statement. Why? Because जो naked mRNA है उसको हम directly administer नहीं कर सकते. Okay, because it gets degraded, right? So this has to be packaged. जो mRNA है उसको package करना बहुत important है in a vector. Okay, that vector can be a viral vector or non-viral vector. So that packaging is very important. Packaging or processing of mRNA. A naked mRNA we cannot administer. So in the light of above statements, choose the correct answer from the option below. Both statement 1 and statement 2 are correct. No. Statement 1 and statement 2 are incorrect. No. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Yes. So option 3 answer होगा of this question. Okay. Given below are two statements. Statement 1, both aspirin and paracetamol belong to non-narcotic analgesics. Yes, correct है. नार्कोटिक में कोडीन मॉर्फिन वो ड्रग्स आते हैं. तो एस्पिरिन पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक है. स्टेटमेंट 2, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन which stimulate inflammation in tissue causing pain is inhibited by aspirin. Yes, correct है. Okay, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है we know that inflammation cause करता है. Okay, in tissue which causes pain. Okay, and that aspirin inhibits prostaglandin. Okay, so that is also correct. Basically जो aspirin COX को inhibit करता है. COX is what? Cyclooxygenase enzyme. Okay, cyclooxygenase enzyme which is important for prostaglandin synthesis. Got it? So this is a target of aspirin. Okay, so both the statements are correct. Statement 1 and statement 2 are correct. Option 1 ही आंसर होगा, right? Yeast are facultative anaerobes. Okay, facultative anaerobe means what? They can grow anaerobically during alcoholic fermentation and aerobically using oxygen for cellular respiration. Means what? Conditional. Depending on condition, they can grow anaerobically as well as aerobically. Okay, so interestingly, wild type yeast cannot live anaerobically using glycerol as their only fuel source. Okay, जो wild type yeast है वो anaerobically नहीं रह सकता. Okay, using glycerol. Why so? Which one of the following is the correct explanation? Let's see the options. Glycerol inactivates alcohol dehydrogenase in yeast. Okay, next, yeast lacks functional glycerol transporter. Next option, yeast cannot regenerate NAD+ in the presence of glycerol. Yes. Okay, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें ही देखा है प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस. Okay, so this glycolysis is
वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिसमें NAD+ का रीजनरेशन होना ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, वेदर इट बी अनएरोबिक और एरोबिक केस, राइट? सो regeneration of NAD+ is very important. So that can happen in presence of glucose only. Okay, and glycerol cannot do that work, right? So what is the option? Basically, glycerol के presence में NAD+ का regeneration नहीं होगा, so ये correct है. Yeast is unable to catabolize glycerol. Okay, so ये direct है. This third option is correct, right? Basically, जो regeneration of NAD+, this is very highly repeated in questions. NAD+ का regeneration होना important है to continue glycolysis. As well as growth. Okay, both the cases, aerobic as well as anaerobic. Next question, suppose that an obligate anaerobe, okay, obligate anaerobe means it is anaerobic case, suffered a mutation that resulted in the loss of triose phosphate isomerase activity. What will be the net ATP yield under anaerobic condition? See, net ATP yield also हमने डिस्कस किया ग्लाइकोलिसिस के वीडियो में. अगेन आई विल सम इट अप. जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसमें इन्वेस्टमेंट फेज है फर्स्ट, एंड सेकेंड इज पे ऑफ फेज, राइट? इन्वेस्टमेंट फेज में 2 ATPs आर यूज्ड एंड पे ऑफ फेज में 4 ATPs आर प्रोड्यूस्ड. ओके, 4 ATPs आर प्रोड्यूस्ड. टोटल जो नेट गेन है दैट इज 2 ATP, राइट? नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली, लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे म्यूटेशन बोला है and that mutation results into a loss of triose phosphate isomerase activity. अभी triose phosphate isomerase क्या करता है? अगर आपको ये समझना है तो ग्लाइकोलिसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, राइट? पूरा ग्लाइकोलिसिस हमने डिस्कस किया है इन डिटेल. ओके, तो बेसिकली जो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज ये एंजाइम है, this will do the conversion of ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ओके, जो ढाप है उसका कन्वर्जन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. ओके, G3P I will write glyceraldehyde 3 phosphate. So both of these are 3 carbon, right? हमें पता है glyceraldehyde 3 phosphate के 2 molecules पे ऑफ फेज को कंट्रोल करते हैं. ओके, कंटिन्यू करते हैं बेसिकली 2 molecules of G3P. So now if this enzyme is mutated, अभी इसमें म्यूटेशन है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा नहीं. ओके, एक मॉलिक्यूल बनेगा लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का जो फिर से ये कन्वर्जन होता है वो नहीं होगा. So there will be only one molecule. Understand that pathway properly and then relate that with this question. Okay, so इसमें जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है उसका एक ही मॉलिक्यूल पाथवे को कंटिन्यू करेगा, राइट? सो यहाँ पे 4 ATPs बनते हैं. ओके, 4 ATPs बनते हैं. So in this case there will be 2 ATPs only. Okay, 2 ATPs and then जो net gain होगा that will be -2 + 2 will be 0 ATPs. Got it? So 1 हमारा आंसर होगा under the anaerobic condition. Next question, which of the following method is used for rapid and accurate detection of toxic organisms in food? टॉक्सिक ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करना, रैपिड एंड एक्यूरेटली. स्टेनिंग, नो.
ATP estimation, no. PCR, yes. MPN counting, why PCR? PCR हमें पता है जो वायरसेस है ना, वायरसेस को भी डिटेक्ट कर सकता है, मतलब स्मॉलेस्ट साइज का भी डिटेक्शन हो सकता है पीसीआर से वेरी एक्यूरेटली, बिकॉज इट इज अ एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन. ओके, एम्प्लीफिकेशन होता है, जो डीएनए है, आरएनए है, उसका पॉलीमराइजेशन होता है, राइट? सो वी कैन डिटेक्ट द टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म इन फूड. This is a very logical question. Okay, logical question. How to solve? I will tell you now. The recent advancement in computing that has exponentially enhanced computing power, right? See, computing power को enhance करने वाला for bioinformatics include. Okay, tough लग सकता है, but we can solve this easily. See, options: logical and high performance computing, no. Bit and graphic processing unit, aided computing, no. Graphic processing units and high performance computing, yes. High performance serial computing, no. Okay, see, now I will tell you why this option 3 is answer and how I solved this. Basically graphic processing unit मतलब GPU. Okay, अभी हम जो लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स जो सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम देखते हैं पावरफुल गेमिंग होना चाहिए, राइट? दैट शुड नॉट हीट अप. ओके, मोबाइल और लैपटॉप शुड नॉट गेट वार्म. तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ग्राफिक्स. तो हम चेक करते हैं जीपीयू क्या है इसमें, एंड दैट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट. दैट इंक्रीजेस द पावर, द गेमिंग. ओके, जो पावर है, कंप्यूटिंग पावर, जीपीयू से इनहेंस होता है. तो जस्ट रिलेट दैट way. Okay, so GPUs are very important when you consider that computing power को enhance करना है. तो GPU अच्छा चाहिए as well as high performance computing. Okay, मतलब performance high चाहिए, right? So this is most suitable option for this question, right? So bioinformatics का जो study होता है, like molecular docking, stimulation, and analysis of protein structures, DNA structures वगैरह, GPU अगर अच्छा है, परफॉर्मेंस अगर कंप्यूटर का अच्छा है, तो ही पॉसिबल होगा. So this is how you can solve this question. Next one, the researchers are looking for possible DNA binding group in a protein structure. तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में DNA binding group का होना, it is most likely to be a. अभी DNA बाइंडिंग ग्रुप, DNA निगेटिवली चार्ज होता है, राइट? निगेटिवली चार्ज. तो प्रोटीन में अगर बाइंडिंग होना है DNA का, तो दैट शुड बी पॉजिटिव चार्ज, तभी इसका बाइंडिंग होगा ना विथ वन अनदर. तो दैट शुड बी अ पॉजिटिवली चार्ज रीजन. ऑप्शन 2. ओके, इजी है. नेक्स्ट वन, which one of the following cannot be used to determine atomic structure of protein? Okay, so cryo electron microscopy we can use, nuclear magnetic resonance spectroscopy NMR यूज करते हैं हम, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी यूज करते हैं. ओके, दिस आर यूज्ड. एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉट. अगर फर्स्ट 3 हम यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक्स में हमने एनकाउंटर किया है बहुत बार, राइट, ड्यूरिंग रीडिंग द थियरीज. तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट यूज्ड. दिस इज यूज्ड फॉर मेटल आयन और एलिमेंट्स, राइट. उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर देखना है, स्ट्रक्चर वगैरह, दैट इट इज यूज्ड, बट नॉट फॉर प्रोटीन्स. एलिमिनेशन से क्विकली सॉल्व हो सकता है, बिकॉज जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है हम यूज करते हैं,
हमने एनकाउंटर किया है, बट नॉट द लास्ट वन. Which one of the following amino acid residue pairs can disrupt alpha helix? So this is also very repeated question. Okay, alpha helix को disrupt करने वाले amino acids डायरेक्ट है. जस्ट रिमेंबर ग्लाइसिन एंड प्रोलिन. ओके, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन. प्रोलिन इंट्रोड्यूसेस किंक इन द स्ट्रक्चर एंड ग्लाइसिन हमें पता है अकायरल है एंड इट कैन डिसरप्ट द अल्फा हेलिक्स. ओके, जस्ट रिमेंबर. लास्ट क्वेश्चन. Which one of the following does not assist in protein folding? ओके, प्रोटीन फोल्डिंग में ये भी इजी है सॉल्व करने में. हाउ? See the options. Grow EL, Grow ES. This is used in protein folding. पर अगर आपको नहीं पता, just read the options. DNA J, DNA K ये भी यूज होता है. प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज भी यूज होता है. See the last option, टोपो आइसोमरेज. अब ये प्रोटीन फोल्डिंग में यूज नहीं होता. This is used in DNA supercoiling. जो डीएनए सुपर कॉलिंग है उसको प्रिवेंट करता है टोपो आइसोमरेज. ओके, जो सुपर कॉलिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें रोल है डीएनए से रिलेटेड, नॉट इन द प्रोटीन. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस very quickly and easily. Okay, so that's it for this video. I hope this video helps you. If you find it helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.